Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Rawat. Today's date 17 December 2020. Standard 8, Subject Science. Chapter number 17, Stars and the Solar Systems. In this chapter, we have already studied that what is stars, the moon and the moon phases, and we draw the diagram of the moon phases, and we have studied the activity 17.3 and the moon surface. We know about the craters. Then we conclude the unit light year. Then we draw the diagram of pole stars, constellations of about Great Bear, Orion, Cassiopeia, Leo Majors, Ursa Majors. Many students are draw the diagram and send me in my WhatsApp number. Very good student, well done about this. बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी जो है वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं. ओके, तो ये जो होमवर्क मैं आपको देती हूँ उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे. ठीक है, जो 20 मार्क्स होंगे उसमें ये सारे मार्क्स इंक्लूड होंगे. सो आप होमवर्क कीजिए. ठीक है, और जो वीडियो है वो आप रेगुलरली देखिए. टुडे आवर टॉपिक तो सोलर सिस्टम्स के बारे में हमने देखा था, और लास्ट में हमने ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी. अभी अलग अलग स्टार्स के बारे में हम पढ़ते हैं. ओके, ये टॉप वाली एक्टिविटी द अर्थ रिवॉल्व्स वाला है ना. ठीक है, यहाँ तक किया था. ओके, द अर्थ कैन बी said to be a satellite of the sun. Through generally we call it a planet of the sun. We use the term satellite for the bodies revolving around planets. Moon is a satellite of the earth. There are many man-made satellites revolving around the earth. These are called artificial satellite. Okay, here the Mercury, Budh. The planet Mercury is nearest to the sun. It is the smallest planet of our solar system. Because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it, as most of the time it is hidden in the glare of the sun. However, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon. So, it is visible only place where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. Mercury has no satellite of its own. मर्क्यूरी को कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है. ओके, देन वीनस, शुक्र के बारे में हम देखते हैं. वीनस इज अर्थ्स नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर. इट इज़ द brightest planet in the night sky. Sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky just after sunset. Therefore, it is often called a morning or an evening star. तो वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स कहा जाता है. ये जो ऐसे सेंटेंस है वो आपको ध्यान से देखने, फिलअप्स में, एमसीक्यू में ये आ सकते हैं. ऑल्दो इज नॉट अ स्टार, है ना. ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई. नाइट स्काई में आपको वीनस को जो है वो देखना है. हियर अगेन एक्टिविटी 17.10. फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन almanac the time when Venus is visible in the sky. You can easily recognize Venus by its brightness. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1 or 3 hours before
सनराइज, है ना. Recognize Venus by its brightness. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1 to 3 hours before sunrise or 1 to 3 hours after sunset. बिफोर सनराइज जो है वो वीनस हमें दिखाई देता है और आफ्टर सनसेट. ओके. वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. It rotates from east to west, while the Earth rotates from west to east. Does it mean that on Venus the sun would rise in the west and set in the east? क्या वीनस में ऐसा होता है कि सन राइज ईस्ट वेस्ट में हो और जो सेटअप से वो ईस्ट में हो, है ना. If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. सपोज आपको चांस मिले, ओके, आपके पास टेलीस्कोप हो, वरना आप कोई ऐसे प्लेनेटरी जो ऑब्जेक्ट है वहाँ देखने के लिए गए हो, साइंटिस्ट हबल टेलीस्कोप्स हो, तो आप एक बार वीनस को देखना. यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून. वीनस के भी ऐसे फेजेस होते हैं सन के जैसे, फेजेस ऑफ वीनस. नाउ द अर्थ. The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. जहाँ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रहते हैं. मीन्स के अर्थ का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वो जो है वो हमें सूटेबल है. Some special environment conditions are responsible for the existence and continuations of life on the earth. These include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range, the presence of water and suitable atmosphere, and a blanket of ozone. We must take care to protect our environment so that life on earth is not disturbed. हमें हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब्स नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे लाइफ जो है वो हमारी सूटेबल हो जाए. फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस. हम सपोज स्पेस में जाके अर्थ को जब देखते हैं, वो हमें ब्लू कलर की दिखती है ना, ब्लू और ग्रीन कलर की दिखती है. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेनेट ऑफ इट्स ऑर्बिट. द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ. द अर्थ हैज़ ओनली वन मून. अर्थ में एक मून होता है. If I am 13 years old, how many times have I gone round the sun? है ना, ये उसको क्वेश्चंस हैं. Then another planet, Mars, मंगल. The next planet, the first outside the orbit of the Earth, is Mars. It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet. मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स. मार्स में 2 छोटे सैटेलाइट्स हैं, है ना. मार्स जो है मंगल, मिशन मंगल मूवी हम स्कूल में से देखने के लिए गए थे, आपको याद हो तो. ओके, उसने पूरा मंगल के बारे में कितना सारा बताया था, है ना. जो स्पेस शटल जो है वो मंगल जो है पूरा लॉन्च मंगलयान पे पहुंचाया था. ये सारी बात हमें वो मूवी में अच्छे से दिखाई है. वरना अभी आप घर पे फ्री हो, ठीक है, तो आप मिशन मंगल एक बार मूवी देख लीजिए. देन जुपिटर, बृहस्पति. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट planet.
इसका मतलब क्या है, जुपिटर ऐसा है कि जिसमें 1300 अर्थ उसके अंदर आ जाती है। तो कितना बड़ा ग्रह, कितना बड़ा प्लेनेट है वो, है ना। द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। हमारे अर्थ से उसका मास भी ज़्यादा है। It rotates very rapidly on their axis. Here the diagram. You are familiar with the equator of the earth. The plane of the equator is called the equilateral plane. Figure 17.21. The plane in which the earth revolves around the sun is called the orbital plane of the earth. These two planes are inclined to each other at an angle of 23.5 degree. This means that the axis of the earth inclined to its orbital plane at the angle of 66.5 degree. Here the diagram. Earth rotates on a tilted axis. अर्थ है, देन अर्थ ऑर्बिटल प्लेन है, और वो जो है वो रोटेट कर रही है. आई हैव एन आइडिया. If you take a large ball which can accommodate about 1300 pieces, then the ball will represent Jupiter and one pea will present the Earth. है ना. एक पी, सपोज पीस के साथ हम एक जो उसको सपोज करें तो ऐसे 1300 पीस हम इकट्ठा करें तो क्या बन जाएगा, जुपिटर. और एक जो छोटा पी है वो हमारी अर्थ है ना. ये अच्छा एग्जाम्पल है. जुपिटर एंड इट्स 4 लास्ट सैटेलाइट्स. ये जुपिटर है, उसके जुपिटर्स में टोटल 4 सैटेलाइट्स है. मीन्स के देयर आर 4 मून्स इन जुपिटर. Jupiter has a large number of satellites. It also has faint rings around it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. If you observe it with the help of a telescope, you can also see 4 of its large moons. Okay, here the Jupiter. Bujo has a naughty idea. If we imagine Saturn in a large pool of water, then it will float. है ना. भूजो हैज़ अ नॉटी आइडिया. उसको क्या लगा, इफ़ वी इमेजिन सैटर्न इन अ लार्ज पूल, बड़े पूल में सैटर्न को डाल दिया है, वाटर इन इट विल फ्लोट, तो वो फ्लोट होगा. सैटर्न इज लेस डेंस देन वाटर. वाटर से वो लेस डेंस है. कौन है, सैटर्न. सैटर्न मीन्स के शनि. बियॉन्ड जुपिटर is Saturn, which appears yellowish in color. What makes it unique in the solar system? Is it its beautiful rings? उसके ऊपर हमें ब्यूटीफुल रिंग्स दिखती है. सैटर्न की बात है ये. These rings are not visible with the naked eye. हम अपनी आँखों से उसको देख नहीं सकते. You can observe them with a small telescope. आपको इसके लिए छोटा एक टेलीस्कोप चाहिए. Saturn also has a large number of satellites. Saturn पे भी बहुत सारे satellites हैं. One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is less than that of water. उसकी density water से कम है. Then another Uranus and Neptune की बात की है. These are the outermost planet of the solar system. They can be seen only with the help of large telescope, like Venus. Uranus also rotates from east to west. Uranus भी east to west जो है वो rotate करता है. The most remarkable feature of Uranus is that it has a highly tilted rotation axis. उसकी tilted rotation एकदम टिल्ट होता है. वो जो है वो हिलता रहता है. एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड्स. इसके लिए हमें ऑर्बिट में ऐसा लगता है कि वो रोल कर रहा है. रोल ऑन इट्स साइड्स यहाँ पे दिया है. देखो अपनी ऑर्बिट पे फटाफट टिल्टेड होता रहता है, हिलता रहता है. द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर the sun
Then the other 4 planets, they are called the inner planets. The inner planets have very few moons. The planet outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much farther off than the inner planets. They are called the outer planets. They have a ring systems around them. The outer planets have large number of moons. बहुत सारे उसमें moons होते हैं. outer planets की यहाँ पे बात की है. This is the diagram in Uranus in its orbital path. Then 17.5. Some other members of the solar system. There are some other bodies which revolve around the sun. They are also members of the solar system. Let us learn about some of them. The first are asteroids. There is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. These are called asteroids. ये जो है वो asteroids है. Asteroids can only be seen through large telescope. एस्ट्रॉइड्स को हम जो है वो बड़े टेलीस्कोप से देख सकते हैं. Here the diagram. Mars, Venus, Mercury, Earth and Jupiter और एस्ट्रॉइड्स. Then comets की बात है. Comets are also members of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. However, their period of revolutions around the sun is usually very long. A comet appears generally as a bright head with a long tail. The length of the tail grows in the size as it approaches the sun. The tail of the comet is always directed away from the sun. This is the comet. डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ कॉमेट है ना. यहाँ पे अलग अलग पोजीशन बताइए कॉमेट की. ऐसे हमें टेलर स्टार जैसे दिखता है. मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली. वन सच कॉमेट इज हेलिस कॉमेट. एक हेलिस का कॉमेट है विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर. एवरी 76 ईयर हमें ये कॉमेट देखने को मिलता है. It was last seen in 1986. 1986 में हमें लास्ट को देखने को मिला. Can you tell then Halley's comet will be visible again? Yes, 1986 plus 76 कर दो तो हमें जो है वो दूसरी टाइम देखने को मिला. देखो I can add 1986 plus 76. 6 plus 6 12 1 8 plus 8 16 6 1 9 plus 1 10 0 then 2 2062 में अगेन हमें हेलिस का कॉमेट देखने को मिलेगा आफ्टर 76 ईयर्स के बाद. ओके. सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट्स. क्या मान्यता है. सुपरस्टिशंस क्या है, क्या अंधश्रद्धाएं हैं. सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर्स. सब लोग थोड़े जो है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी अंधश्रद्धाएं होती है. तो कई लोगों का मानना ऐसा है कि कोई डिजास्टर्स होने वाला हो, है ना, सच एज वार्स, युद्ध होने वाले हो, तम एपिडेमिक्स एंड फ्लूड्स, बाढ़ आने वाली हो, कुछ भी ऐसा होने वाला हो. तो क्या होते हैं कॉमेट्स जो है वो मैसेंजर्स है, वो हमें बताते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें होने वाली हैं. बट दीज आर ऑल माइथ्स एंड सुपरस्टिशंस. बट ये सारी मान्यता ही है. अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन. कॉमेट का दिखना एक नेचुरल फिनोमिनन है. वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट, है ना. इसका कोई रीज़न नहीं है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, है ना. कॉमेट्स तो है, कॉमेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, वो सारे नेचुरल फिनोमिनन है जो हमें जो स्काई में यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं. ठीक है.
तो ये सारी सुपरस्टिशंस है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने इतना पढ़ा है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।